Hey guys, welcome back to my channel. Today is Monday and I'm here with Lecture Monday with the next part of technical terms to be learned in plant breeding. Starting with a new alphabet that is Q. Quadriallele analysis. Analysis based on double crosses obtained by crossing n homozygous lines in a diallele fashion and then crossing the F1s so generated according to a diallele scheme with the restriction that in any double cross a homologous line must not occur more than once as a parent. मतलब homologous को cross तो कराना है लेकिन कोई भी एक homologous line दो बार as a parent use नहीं होना चाहिए. Next is quadrivalent, that is structure produced by pairing among four homologous chromosome during meiosis. Meiosis के टाइम पे जो चार वाला पेयर बनता है ना उसको हम लोग quadrivalent बोलते हैं. Then qualitative characters, characters showing distinct classes and a little or no effect of the environment governed by oligogenes. तो क्वालिटी वाला जैसे कि कलर हो गया और ये सब किससे गवर्न होता है ओलिगोजीन से. देन क्वालिटी दैट इज सुटेबिलिटी ऑफ अ प्रोड्यूस फॉर अ स्पेसिफिक यूज. क्वालिटी चेक. क्वालिटी अगर बायोलॉजिकली देखा जाए तो क्या है एक्चुअल यूजफुलनेस ऑफ अ प्रोड्यूस और फूड व्हेन कंज्यूम्ड बाय एक्सपेरिमेंटल एनिमल्स. यूजफुलनेस टू ह्यूमंस प्रेडिक्टेड ऑन दिस बेसिस. और वही न्यूट्रिशनल वैल्यू में अगर चेक किया जाए दैट इज द वैल्यू ऑफ अ प्रोड्यूस और फूड इन ह्यूमन और एनिमल्स न्यूट्रिशन. नाउ क्वालिटी ऑयल के कंटेंट में न्यूट्रिशनल में देखिए ऑयल में फैटी एसिड कंजम्पशन ऑफ एन ऑयल. और वही ट्रेट में देखा जाए तो अ कैरेक्टर दैट डिफाइंस सम एस्पेक्ट ऑफ द प्रोड्यूस क्वालिटी. So that's it for the day. If you like the video, please hit the like button, share it, and don't forget to subscribe my channel. I'll again come up till that. Take care. Bye bye.